आपको ये लेवल फेल हो गया, अभी बाइंग दे दो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओम भाई की ऑडियंस बहुत कम है, हो जाएगा यार, अभी उनका नया चैनल है, हो जाएगा। ओम भाई की ऑडियंस बढ़िया हो जाएगी धीरे धीरे। कि ऊपर वो पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इट डज। सो वी विल कीप वॉच ऑन दिस
और स्कैल्पिंग हम लोग 1 मिनट के अंदर करने वाले हैं। राम राम भाई जी, राम राम। कभी काम करता है कभी नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ उसे ऐसी एंट्री बनेगा मार्केट में। अगर ऐसे एंट्री नहीं बनना, सीधा भाग रहा, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ तो कमी भाई का नॉलेज इतना बेस्ट है। हाँ देखो भाई, हो सकता है ये भी कमी हो सकती है कि ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। 29 वाला लेवल देखते हैं भाई। विलियम जैन नामकरण करते रहो से, नामकरण करते रहो। मत करना अभी से, ये देखो रोकेगा मार्केट में, फिर से बता रहा हूँ उसे। मोहब्बत शिवम विलियम बायर किंग, हाँ ये तो बोलते हैं यार, देखो बायर किंग तो बोलते हैं आप सभी लोग, बायर किंग तो बोलते हो आप सभी लोग। अगर टैब होते सार लेते तो 40 पे मिल जाते अपनों को, 40-44 पे मिल जाते अपनों को, लेकिन अभी नहीं लेने से। जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा नीचे आएगा अभी मार्केट। देखो क्या सेटअप बनाएगा से मैं फिर बता, रॉकेट अभी नहीं यार। अभी मार्केट देखो ये जा रहा, थोड़ा ये लेवल रोकेगा मार्केट, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग करके जाएगा फिर से मार्केट पूरा बाइंग साइड फटेगा से। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप बनेगा। और अभी ऐसे ही करने वाले हैं तो मार्केट थोड़ा सा टारगेट देगा, नीचे आएगा और उसके बाद फिर से फंस जाएगा से, ध्यान रखना। आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है। देखो भाई रिस्क मैनेजमेंट का गेम है पूरा, आपको समझना पड़ेगा से। जितना ज़्यादा अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट, उतना ज़्यादा अच्छा आपकी एंट्री प्लान। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगे। ये चीज़ नहीं समझोगे तो भाई कुछ नहीं कर सकते से। अगर यही चीज़ें नहीं समझ पा रहे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, भाई कुछ भी कर लो, बट 26 में तो दुनिया खत्म है। अब क्या कर सकते हैं अपन यार। गोल्ड को तो अपन साथ लेके जाएंगे से, अपनी कवर खुदवा लेंगे और उसके अंदर गोल्ड रख के बैठेंगे से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर। ओम भाई के चैनल का नाम बता दो। ओम विलियम मैंने बताया तो सही आपको यार, OM और WILLIAM, ये उनके चैनल का नाम है। ओम विलियम उनके चैनल का नाम है, सर्च कर लेना। लंदन सेशन में धमाका कर लेना। लगभग उन्होंने कल कितने पिप कैप्चर करे थे से, उन्होंने लगभग कल कितने पिप कैप्चर करे थे। ओम विलियम यही उनका, देखो ये उनके कैप्चर थे से। कल जो उनके कैप्चर थे 423 पिप एक कैप्चर थे, 158 पिप एक कैप्चर थे। लगभग उन्होंने कैप्चर करे थे कल 581 पिप कैप्चर थे से। कल उनके 581 पिप कैप्चर थे। अभी किसी ने पूछा था $10 में कितने बनेगा, मैंने $10 में 120 बनाया था। अरे बढ़िया।
एसएनसी आईसीटी किसी भी फॉलो नहीं करते, ओनली प्राइस एक्शन करते हैं दोनों भाई, दोनों। यूरो भी कर लें। एंट्री मैं बता चुका हूँ भाई, नीचे आके जब बनेगी एंट्री, यहाँ से मत करना भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट फिर से वही काम करेगा। मार्केट में जो एंट्री आपको करना है, लेवल मैंने मार्क करा, सेफ एंट्री इस लेवल से बनेगा, इस लेवल से करना आप, सेफ एंट्री आपकी इस लेवल से बनेगा। एंट्री लेवल मार्क कर लो आप सभी लोग, ये एंट्री लेवल है से आपका एक अच्छा एंट्री लेवल, और ऐसा लेवल ये बनेगा। करने दो से क्लोजिंग मार्केट में, क्लोजिंग करने दो मार्केट में, एंट्री कर लेना। 500 पिप, हाँ 500 कुछ पिप कैप्चर थे उनके। बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं पता। 4.5 के सब्सक्राइबर हैं क्या उनके? शायद इतने ही हैं, इतने ही, मैं देख लेता हूँ एक बार से, वैसे इतने ही हैं शायद उनके, ज़्यादा नहीं है, 4000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं उनके। .07 से 4.07 कितने बजे आते हैं? सब्सक्राइब कर लो से 10 बजे आपको लाइव मिल जाएंगे। गोल्ड का सिंबल क्या है बाइनेंस में? बाइनेंस में शायद गोल्ड नहीं आता, वो क्रिप्टो एक्सचेंज है। हाँ करेक्ट, हाँ यही है, यही बाइनेंस में शायद गोल्ड ट्रेडिंग होती है क्या? एक बार बताओ यार, सभी लोग बताओ, बाइनेंस में गोल्ड ट्रेडिंग होती है? मुझे नहीं लगता से, वो क्रिप्टो एक्सचेंज है ना कि फॉरेक्स एक्सचेंज है वो, तो शायद बाइनेंस में नहीं होती से, बाइनेंस में नहीं होती। हाँ नहीं होती, बाइनेंस में नहीं होती।
Monday.com's intuitive work management platform, you have the power. Not IT, not क्या बस आप बताइए आप कैसे? मैं एकदम अच्छा। आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया भाई। 1200, 12,000, 12 करोड़ कितने भी लोड सेल कर लो। 15 मिनट में सेलिंग जोन चला। बिल्कुल भाई मैं देख चुका हूँ। 4 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से सभी मैं देख चुका हूँ। क्लोजिंग चाहिए अपनों को से। क्लोज करेगा तो अच्छा रहेगा, क्लोजिंग नहीं करा तो भाई कुछ नहीं होने वाला। लव यू भाई, लव यू। 4136 को हिट करके जाएगा। हाँ वहाँ भी देखते हैं। वो लेवल भी अपना है, उसे भी अपनों ने लगा रखा। किस लेवल पे भी अपन करेंगे मार्केट में प्लान। तो दोनों लेवल हैं जहाँ से अपन देखने वाले हैं। $900 में 0.05 लेना आपको से। $900 के साथ 0.05 के साथ करना, ज़्यादा नहीं करना। ऑनलाइन बैंक के थ्रू बैंक फ्रीज नहीं होता जितना मुझे पता है। देखो मेरा तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। पचपन रेजिस्टेंस से रोक सकता है जब तक तो अपना टारगेट डन हो जाएगा यार। मैंने सेल कर रखा 46 से। सही है भाई। एसएल के साथ बैठो, जो भी आपका एसएल है उस एसएल को लगा के बैठो। हाँ भाई मैं इससे करता हूँ। मैं इतनी कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। देखते हैं 3 मिनट ऐसे क्लोजिंग में क्या मार्केट 3 मिनट बाद क्लोज करेगा या नहीं करेगा। व्हाट इज द नेम स्ट्रेटजी फॉर यूज ओनली प्राइस एक्शन। भाई 1 मिनट में कैंडल देख दो भाई। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट में भी। 1 मिनट में भी कुछ नहीं। इसे डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर बनना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन आपको क्लोजिंग 5 मिनट में चाहिए। से 1 मिनट से देखो अपना कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन पूरा स्टैक से मार्केट में 5 मिनट के बेस पे अपन प्लान कर रहे हैं। तो अपन 1 मिनट में नहीं जा सकते। से क्लोजिंग चाहिए सिर्फ अपनों को 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखते हैं क्लोजिंग कैसी रहने वाली है। से क्लोजिंग अच्छी करेगा नहीं करेगा मार्केट। क्या मार्केट क्लोज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इंडियन मार्केट क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं लग पाता है इंडियन मार्केट का। रात को लेट सोते हैं, दिन में जल्दी उठते हैं। और इंडियन मार्केट का जब टाइम होता है तो अपन सो रहे होते हैं से उस टाइम। तो टाइम चाहिए ऐसे इंडियन। ऐसे यार 24 घंटे ये चलता है, ऐसे कर सकते हैं। लाइक कर दो एक बार सभी लोग मिलके। जल्दी जल्दी लाइक बटन हिट कर दो जिसने नहीं करा है। लाइक बटन हिट। इंडियन मार्केट से बेटर न्यूयॉर्क मार्केट। हाँ सही बात है। 1 मिनट 22 सेकंड। आप रात में भी ट्रेड करते हो? अगर सेटअप बनते हैं तो कर लेता हूँ। अगर एक अच्छे सेटअप होते हैं, एक बिंदास वाले सेटअप होते हैं तो रात में भी कर लेते हैं। कभी भी कर लो जब भी मार्केट सेटअप दे दे आपको। रेड बुल क्या बात है। उड़ जाएंगे से उसकी तरह। जो देखा है ना आपने ऐड देखा रेड बुल वाला, जो बकरी के भी पंख लगा के उड़ा देता है। ऐसे फिर ढूंढते रहोगे शिवम भाई कहाँ गए। फिर लाइव क्यों नहीं आते? अबे यार अब देखो नहीं कर सकते यार। लाइव अपना टाइम है लाइव का, सभी चीज़ें होती हैं। अब मैं पूरे दिन तो लाइव नहीं बैठ सकता। हाँ भाई ऐड साथ में ऐड कर लिया करें, साथ में कर लिया करेंगे। चलो मैं देखता हूँ आगे करेंगे से कोई डिसीजन लेंगे 2000 न्यू ईयर में लेंगे से कोई 24 घंटे वाला डिसीजन।
कैसे आप सभी के साथ 24 घंटे अपन मिल सकते हैं। अगर मैं आपके साथ एंट्री कर लिया तो समझो आपका स्टॉप लॉस गई है। मत करना भाई, मत करना, पता चले मेरा स्टॉप लॉस भी खा गए आप। पूरे दिन ट्राई करो भाई, देखते हैं यार, देखो होगा धीरे धीरे, अभी तो अपनी शुरुआत है भाई। मेंबरशिप में कर लो फिर आपको भी फायदा हो। अरे नहीं यार, मेंबरशिप नहीं, ऐसे ही फायदा बहुत है, ऐसे कमा लेते हैं अपन लोग। छोटी छोटी ट्रेड करते हैं, ज़्यादा बड़ा एक साथ नहीं बनना चाहिए, छोटे छोटे बनो, ज़्यादा एक साथ बड़े छलांग मारोगे से गिर जाओगे। भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे गौतम भाई, कहीं नहीं जा रहे, आराम से बैठे हैं अभी अपन लोग। देख रहे हैं क्या रहने वाला। यूरो यूएसडीटी प्लीज, यूरो बता देते हैं, अभी क्लोजिंग चाहिए वैसे अपनों को। यूरो यूएसडीटी बता देते हैं भाई। 15 मिनट में सेलिंग स्ट्रक्चर, 4 घंटे में तब। अरे बड़ा साइडवेज मार्केट है, ऐसे मत करो यार कुछ। 4 घंटे में फंसा हुआ मार्केट है एक लेवलों के पास, नहीं जाने वाला भाई, कहीं नहीं जाने वाला। ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करे बाइंग करने से, ऊपर से सेल जाए तो इग्नोर करना, भी जाने देना। 20 से 30 पे स्कैल्पिंग के लिए आपको करना पड़ेगा 9 और 21 EMA का यूज, 9 और 21 EMA का यूज। ज़्यादा ऊपर नहीं बचा है, 5 7 6 7 8 ये 3 लेवल है जहाँ से हो सकता है। हाँ देखते हैं, वैसे अपना जो लेवल है मार्केट को जाना चाहिए, मार्केट को जाना चाहिए 80 या 888 वाले लेवल पे। डेली में भी फंसा हुआ, हाँ डेली टाइम फ्रेम में भी फंसा हुआ चार्ट है। अब देखो फंसे हुए चार्ट में ट्रेड sell it, we ship it. Put the strength of Amazon behind your business. Transparent rates and delivery in 2 to 5 days. Don't just send a package, send a message. Ground shipping, built for what's next. आप कैसे हैं? बढ़िया, बस आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा, आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया भाई, 1200, 12,000, 12 करोड़ कितने भी लोड सेल कर लो। 15 मिनट में सेलिंग जोन चला, बिल्कुल भाई मैं देख चुका हूँ। 4 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से सभी मैं देख। क्लोजिंग चाहिए अपनों को, से क्लोज करेगा तो अच्छा रहेगा, क्लोजिंग नहीं करा तो भाई कुछ नहीं होने वाला। लव यू भाई, लव यू। 4136 को हिट करके जाएगा। हाँ वहाँ भी देखते हैं, वो लेवल भी अपना है, उसे भी अपनों ने लगा रखा। इस लेवल पे भी अपन करेंगे मार्केट में प्लानिंग से। तो दोनों लेवल हैं जहाँ से अपन देखने वाले हैं। $900 में 0.05 लेना आपको, से $900 के साथ 0.05 के साथ करना, ज़्यादा नहीं करना। ऑनलाइन बैंक के थ्रू बैंक फ्रीज नहीं होता जितना मुझे पता है। देखो मेरा तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। 55 रेजिस्टेंस से रोक सकता है जब तक तो अपना टारगेट डन हो जाए यार। मैंने सेल कर रखा 46 से, सही है भाई। एसएल के साथ बैठो, जो भी आपका एसएल, उस एसएल को लगा के बैठो।
ट्रेडिंग सेटअप बनने का वीडियो बना तो मैं लाइव में बता दूंगा से 600 लाइक बन के वॉचिंग लाइक सिर्फ 600 देख लो यार, इतनी कम लाइक है अपनी। भाई अच्छा आइडिया है कुटाई कराने के तभी तो पता चलेगा। हाँ भाई 11 लोड से वो अभी मैं करूँगा से, अभी मैं करूँगा थोड़ा कैपिटल इंक्रीज करूँगा उसके बाद करूँगा से। अभी मैं अपने कैपिटल के हिसाब से कर रहा हूँ, मैंने अपना कैपिटल थोड़ा कम कर रखा तो मैं क्वांटिटी भी कम करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कैपिटल, मैं जितना कैपिटल पहले था तो उतनी ट्रेड अपन करने वाला है, कम कैपिटल से कर रहे हैं। मैं इंक्रीज करूँगा अपना कैपिटल कुछ देर बाद, तभी मैं कुछ दिनों बाद मैं कर लूँगा। सेटअप का वीडियो मैं बनाऊँगा अगर कुछ बनेगा तो। भाई थोड़ी लाइक में खुश रहते, अरे अपन भी थोड़ी लाइक में खुश रहते हैं, ज्यादा अपनों को नहीं चाहिए, बस 1000 लाइक की जरूरत होती है अपनों को। भाई आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं? भाई मुझे लगभग 5 साल होने वाले हैं, अब तो कैपिटल बिलियन चल रहा होगा। अरे हाँ भाई मैं खरीद चुका हूँ उसे, बोलते हैं ना उसे 400-500 करोड़ वाला प्राइवेट जेट, और क्या बोलते हैं एक आलीशान बंगला, अपना प्राइवेट बंगला पूरा, वो मैं सब खरीद चुका अपने कैपिटल से ही। मेरे एनालिसिस था इतने से रिवर्स होना चाहिए, लेकिन 40 से रिवर्स हुआ। मैंने होल्ड था 48 से, टारगेट 57 का था। अरे बढ़िया, देखो मिल चुका है टारगेट वैसे आपको 55-57 वाला टारगेट तो लगभग आपका हिट हो चुका है। आपके चैनल पे ऐड बहुत आते हैं भाई, नहीं पता देखो ऐड क्यों आते हैं। आप कर ले से वो कर सकते हैं, प्रीमियम ले सकते हो, 100 कुछ रुपए का आता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखते हैं, नहीं जा रहा मार्केट, अभी नहीं जा पा रहा भाई लोगों मार्केट, अभी कोशिश कर रहा है रोकने की। भाई आपकी नॉलेज अच्छी है, आप ईडी डिप्लॉयमेंट में काम कर। अरे भाई मतलब जॉब से फ्री करने के लिए तो अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कहीं कुछ अपनों को नहीं करते। इसी वजह से तो अपन क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करना अपना, अपना कैपिटल कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाए बस, अभी मेरा टीपी सेट, अच्छा टीपी आपने सेट कर रखा, सही है। पैसा भी वैसे ही आता है जैसे ऐड, वैसे मनी शिवम भाई अंबानी। नई नई काम, नई नई बातें लेके आते हैं सही। $1 मिलियन को 100 कैसे बना सकते हैं? एक दिन में बना सकते हो सही। मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आंखें बंद करके से बटन हिट कर दो बाइंग और सेलिंग का। शिवम भाई गोल्ड 42-12 और 42-19 तक जा सकता है 4 घंटे के एनालिसिस के हिसाब से। देखते हैं भाई, अभी तो अभी निकालो से इसको, अभी इस वाले लेवल को निकालो, उसके बाद देखेंगे भाई। 4 घंटा देखो, लो भाई 4 घंटा भी देख लिया आपने, बताओ क्या नज़र आ रहा है इसे 4 घंटे में आपको? कैसे भयानक वाला कैंडल है, 5 मिनट से 4 घंटे में, और ऊपर नीचे पूरा हैमर कैंडल टाइप का ये खत्म होने की कोशिश कर रहा, कुछ नहीं।
आंखें बंद करके बटन हिट करते रहो, ट्रेड लगती रहेगी, सही बात है और आपका पैसा खत्म होता रहेगा। लॉट साइज बढ़ा रखो, सेकंड $100 बन जाए। अरे बनाना नहीं यार, अपनों को इतने बड़ा लालची नहीं बनना यार। देखो लालच करोगे फंसोगे मार्केट में से। लालच मत करो, अभी जितना आप रिस्क ले सकते हो उसी के साथ ट्रेड करो। मेरा अच्छा डिसीजन है कि आपको लगता है कि आपका भाई बड़े लोड के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि जितना अच्छा शुरू में डिसिप्लिन रहेगा उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे आप। आगे आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर आपको एक लंबे टाइम और बड़े टाइम के लिए ट्रेडर बनना है तो भाई आपको अपने आज के हालातों के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले एसएल लेगा फिर टीपी लेगा। अरे देखते हैं भाई, हाँ पहले कोशिश तो कर रहा है ये एंट्री लेने से पहले एसएल तक आ जाए और उसके बाद टीपी तक जाएगा ट्रेड देने, ऐसा भी हो सकता है। फंस गया मार्केट से। मुझे शिवम भाई आपको रोल्स रॉयल कहाँ है, मुझे बैठा दो मैं खरीदूंगा। देखो यार, देखो सीधा सीधा आपके भाई की एक ही बात है, या तो खरीदनी है पूरी, जैसे बोला था, जैसे आप बोला था, किसने बोला था, रतन टाटा ने बोला था सही कि BMW अभी अपन खरीद नहीं सकते, ऐसी अपन अभी नहीं खरीद सकते क्योंकि अपनों को सीधे रोल्स रॉयल नहीं खरीदनी, सीधा कंपनी खरीदनी है भाई सब लोग इतने ले तो भाई ले सकते हैं। देखो उनका कैपिटल अच्छा है, बड़े कैपिटल है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, सभी ले सकते हैं। इसे फेवरेट कोई कार नहीं है मेरी, बाइक फेवरेट होती है, वो भी कोई अच्छी ऐसे फेवरेट नहीं। मैं देखूंगा से अगर कोई एक कार मुझे बाइक अच्छी पसंद है तो अपन निकालेंगे। 2027 में जब अपन घर से बाहर निकलेंगे ना तो अपनी बाइक लेकर ही निकलेंगे, एक बढ़िया वाली। मुझे ब्लैक रॉक खरीदना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना है। नहीं यार रियल में भी करते हैं, देखो यार रियल में भी कर लेते हैं। स्प्लेंडर बाइक हाँ ये भी बात है, स्प्लेंडर बाइक भी सही है यार। सब चीज़ें सही हैं जैसे जिसको अच्छा लगे। भाई ट्रेड एक्टिव होगी क्लोजिंग के बाद, क्लोज करेगा तो ट्रेड एक्टिव होगी, क्लोज नहीं करने का तो भाई ट्रेड एक्टिव नहीं होने वाली है। ये मुझे लग रहा है मार्केट नहीं देने वाला। डिग्री का क्या फ़ायदा, हमको ट्रेडिंग करना है तो भाई डिग्री का फ़ायदा है आप सभी को। अगर आपको ट्रेडिंग करना तो आपको डिग्री कैसे करनी पड़ेगी, से नॉलेज लेना पड़ेगा यार। लूना लूना भी सही है। राजदूत तो थी यार, मतलब जब शुरू में राजदूत थी बहुत पुराने टाइम में। देखते हैं, इसे इंतजार कर लो अभी। ब्रो कंपनी कब दे रहे हो, जब मैं खरीदूंगा तो अपनी कंपनी। अरे हाँ सही बात, अपनी कंपनी से खरीदेंगे, से दूसरे का कोई प्रमोशन नहीं, अपनी कंपनी से खरीदेंगे। डिग्री का फायदा होता है, देखो से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो भाई, तो डिग्री आप पे, मतलब डिग्री का मतलब ये नहीं आपको पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, मतलब डिग्री नहीं बोल रहा मैं, पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ। आप डिग्री करो, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके दिमाग का विकास नहीं होगा, और जब तक आपके दिमाग का विकास नहीं होगा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जिसे आप बोलते हैं मेडिटेशन कर लें या ये कर लो वो कर लो, सभी चीज़ें आपके से माइंड के ऊपर रह जाएंगे। भाई हेलीकॉप्टर लेना चाहता हूँ, बिल्कुल भाई ले लो, मेहनत करो हेलीकॉप्टर के जैसे। मैंने मास्टरी कर रखी है 9 जो मैंने भी अभी करी थी मेरे अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मेहनत हेलीकॉप्टर जैसी करो से, देखो जो आपको लेना हेलीकॉप्टर लेना तो हेलीकॉप्टर जैसी मेहनत करो जितनी वो मेहनत करता है। आपकी टीम है? हाँ बिल्कुल टीम है पहले एयरफोन तो ले लो हेलीकॉप्टर तो तब लोगे हैं आप मेडिटेशन कर, तो एक ही बात है। देखो बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, बुक पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, अपने दिमाग को शांत रख लो, सभी चीज़ें एक है। 20 लाख की क्या बात है, तो मैं दिल की बात बोल दी आपने यार, आपने दिल की बात बोल दी। जब भी खरीदेंगे एक बाइक अच्छी वाली खरीदेंगे, नहीं बाइक तो है लेकिन अब भी जब खरीदेंगे बढ़िया वाली खरीदेंगे। इंडियन मार्केट में 80 के लॉस हो चुका है भाई, कोई सी भी मार्केट में लॉस होगा
अगर आप नहीं सीखोगे अच्छे तरीके से तो सही। आपके टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं। BMW, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको खरीदेंगे, अच्छी बाइक ही खरीदेंगे। नहीं जा रहा मार्केट से, कहीं नहीं जाने वाला, बड़ा साइड बेस फंस चुका मार्केट, कहीं नहीं जाने वाला से पूरा साइड बेस हो गया है। BMW, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको खरीदेंगे, अच्छी बाइक ही खरीदेंगे।
Here's how I built my own profitable AI agent day trader completely within n8n. Now here's how the agent works. We can send over any stock ticker like Tesla here, and once we click enter, the agent will first get all the candlestick data as well as recent news sentiments to recommend us a trade. Here we can see that it's recommending for us to sell Tesla at an entry price of $325. We also have a stop loss in case the price does raise a bit too high, and we also have a target and exit price at $322. Next, I'll be going over how this agent actually works in the back end, and make sure to stay till the end and I'll show you how to build this from scratch so that you can implement it yourself in your own trading. So now let's go ahead and do a deeper dive into our n8n AI agent workflow. So starting off, we're going to communicate with Telegram, meaning that we're going to send the tickers over via Telegram and we'll get the analyses back via Telegram as well. And the way this AI is going to help us generate trades is through two different data points. The first is this 1 minute, 15 minute, and 1 hour candlestick data. So all we're doing is taking the last 100 minutes, the last 115 minutes, and then the last 100 hours. And then once we have all that data, we're going to combine it with any recent stock news articles for the past day. And this way we can get a complete view of both any technical indicators as well as any macro events that could be happening regarding the stock. Then after all that's done, we're going to clean up all the data, merge the two data sources. We're going to aggregate it, send it over into an AI agent, which is going to help us form the final trade opinion. And again, everything is data focused, so there's no bias at all. All it's looking at is literally the prices of every minute, hour, and every 15 minutes. It's able to see all the volume levels as well. It's going to be able to calculate its own technical indicators, and then finally it sees some outside opinion via news sentiment, and from there it'll form a final opinion that we can view in Telegram and decide whether we want to take the trade or not. Now before we continue, if you want to get this template as well as join an active community of AI builders with full in-depth guides on AI agents, make sure to click the link in the description. Now let's go ahead and build this from scratch in n8n. So let's add the first step, which is going to be the trigger that starts this entire workflow. And just like I showed you in the beginning of the video, we'll use Telegram. So go ahead and select on message. And I've typed in test on Telegram. So if we test this step, we should see test as the text right here. Now what we need to do is get live market. Now let's go ahead and build this from scratch in n8n. So let's add the first step, which is going to be the trigger. That starts this entire workflow. And just like I showed you in the beginning of the video, we'll use Telegram. So go ahead and select on message. And I've typed in test in the beginning of the video, we'll use Telegram. So go ahead and select on message. And I've typed in test on Telegram. So if we test this step, we should see test as the text right here.
Now what we need to do is get live market data for. Now let's go ahead and build this from scratch in N8N. So let's add the first step, which is going to be the trigger that starts this entire workflow. And just like I showed you in the beginning of the video, we'll use Telegram. So go ahead and select on message. And I've typed in test on Telegram. So if we test this step, we should see test as the text right here. Now what we need to showed you in the beginning of the video, we'll use Telegram. So go ahead and select on message. And I've typed in test on Telegram. So if we test this step, we should see test as the text right here. Now what we need to do is get live market data for that stock ticker, and the way we do this is through an API called the 12 data. So all you need to do, which is completely free, is sign up for an account and then head over to your API keys. Now this API lets you use this 800 times for an account. API called, what you need to do is get live market data for that stock ticker, and the way we do this is through an API called the 12 data. So all you need to do, which is completely free, is sign up for an account and then head over to your API keys. Now this API lets you use this 800 times every single month, as well as 8 times a minute. So you basically will never run out of credits unless you're running this like an absolute madman. But I'm assuming most of you should be completely fine with the free account on this plan. So once you get your API key, head back to N8N and we can begin with the HTTP requests, where we'll actually get the market data. So go ahead and select the HTTP request here. And like I mentioned in the beginning of the video, we'll separate this out by 1-minute candles, 15-minute candles, as well as 1-hour candles. So the first one will be 1 minute. And then feel free to copy this URL exactly. All you need to do is type in api.12data.com/time series, since we do want the time series candle.
candles on the stocks. Next, we'll need to refine our searches. So we'll go ahead and click the send query parameters button. And this is where we'll be able to tell the API what exactly we want. So like what ticker, what type of candles, and just any other data or information. So first, and the most important obviously, is that we need to know what symbol to use. So go ahead and type in symbol as the name, and then we'll just drag over the text from Telegram. Now I wrote test here, which obviously wouldn't actually be a symbol. So let me go back to Telegram and just type in Apple so we can continue on here. So all I did quickly was type in Apple to the Telegram chat. So now we can reference this AAPL stock ticker inside this HTTP request. So double clicking into this, what we need to do now is drag over the symbol. So let me do this one more time so you can see how this works. We head over into our Telegram trigger. We can see inside chat, what we typed in for the text is Apple. So just simply drag this in. And again, this is depending on what you write. I wrote Apple, but if you want to do Tesla, just type in TSLA and it'll analyze Tesla for you. Next, we need to know the interval for the candles. And like I mentioned, we're going to do 1 minute first. So add this parameter, type in interval, and then the value here will be 1 minute. Next, we want to know how many 1 minute candles to actually get. So we'll first select output size, and this can be depending on how thorough of an analysis you want, but I find that 100 candles is plenty, more than enough to kind of get an accurate trade signal as to what you should do for a certain stock. So I'll type in 100 here. And then finally, we need to validate our account. So we'll type in API key, and this is where you'll paste in your API key that I told you to get from your free account. And then after testing step, we can see that there's an invalid interval. And the reason for this is because this needs to be 1 minute, not just 1 M. So now test step once again, and it should provide all the
the 1 minute candles for Apple, and these are going to be 100 1-minute candles, and it should put this as become your free account. And then after testing step, we can see that there's an paste in your API key that I told you to get from your free account. And then after testing step, we can see that there's an invalid interval, and the reason for this is because this needs to be 1 minute, not just. We can see that where you'll paste in your API to validate that I told you to get from your free account. And then after testing step, we can see that where you'll paste. Finally, we need to validate our account, so we'll type in API key, and this is where you'll paste in your API key that I told you to get from your free account. And then after testing step, we can see that there's an invalid interval, and the reason for this is because this needs to be 1 minute, not just 1M. So now test step once again, and it should provide all the 1 minute candles for Apple, and these are going to be 100 1 minute candles. So we can see this is the date, time, open, high, low, close, in volume, 1 minute once again, and for the get for us plenty how get, and the value here will be 1 minute. Next, we want to know how many 1 minute candles to actually get. So we'll first select output size, and this can be depending on how thorough of you kind of get an accurate trade signal as to what you should do for a certain stock. So I'll type in 100 here, and then finally we need to validate our account, so we'll type in API key, and this is where you'll paste in your API key that I told you to get from your free account. And
And then after testing step, we can see that there's an invalid interval again. And so we can see this is the date, time, open, high, low, close, and what's going to do this is copy and paste this 2 more times, but rather than 1 minute, we'll do 15 minutes and then 1 hour. So I just pasted this 2 other times. Let's click into the second one and we'll change this to 15 minutes. And then we don't need to change anything else here. All we need to change is this interval. So rather than 1 minute, this will now be 15 minutes.
and then making sure that and we'll deal high and again first depending on what you write. The text is Apple, so just simply drag this in. And again, this is depending on what you write. I wrote Apple, but if you want to do Tesla, just type in TSLA and it'll analyze Tesla for you. Next, we need to know the interval for the candles. And like I mentioned, we're going to do 1 minute first. So add this parameter, the candles to actually get. So we'll first select output size, and is plenty stock. So I'll type in, and this is where you'll paste in your API key that I told you to get from your free account. And then after testing step, we can see that there's an invalid interval. And the reason for this is because this needs to be 1 minute, not just 1M. So now test step once again, and it should provide all the 1 minute candles for Apple. And these are going to be 100 1 minute candles. So we can see this is the date, time, open, high, low, close, and vol. Going to do this is copy and paste this 2 times. Let's click. Need to change is this interval. So rather than 1 minute, this will now be 15 minutes. And then making sure that it can actually read the stock to one below. And this is going to be 1 hour. So rename this appropriately. And then rather than 1 minute, we'll do 1 hour here. And just to see that this works, we can test this step. And we have all the 1 hour candles for Apple. So this is at 3:30 that this, we name this one up to our final one below, and this is going to be 1 hour. So rename this appropriately. And then rather than 1 hour candle 30 for simple, just click this little plus here and we can type in merge. And then for the number of inputs, we'll select this to be 3. And then let's go ahead and wire all these.
up together. So now we have the 1 minute candles, 15-minute, and 1 hour candles all combined. So now testing out this workflow, we can see that we have 3 items from this merge node. So the 1 minute, 15-minute, and 1 hour candles. And to make this a bit more organized, we can combine these 3 items first into 1 item instead. So go ahead and click this add here, and then we'll just aggregate all these nodes. So we'll select all item data into a single list. We'll test this step, and it's going to be the same exact data.
Month-end close can be chaotic with lots of manual work and looming deadlines, but it doesn't have to be that way. I had made this stock analyzing candle. This upward movement was accompanied. At the first, you have to come to N10 if you don't have the billing and get the credential. So go with create new credential. So right now we have to give the access token to, and here can have to be like this. That if you have to deactivate it, come here again and paste that. That's Month-end close can be chaotic with lots of manual work and looming deadlines, but it doesn't have to be that way. Introducing our API key has been generated successfully. Just go with copy and come here again and give the API key, paste, and then go save. As you can see, the creation successfully data. We need to register the first. So let me show you that why you actually just uploading the 12 data. Before that, also I'm showing you that why actually need the 12 data API. You have to be on the placeholders kind of this thing, and in the key icon you have to give the 12 data API, which is very simple. Go and cross with that. Just go here, click this thing, the orange icon, 12 data register, and you can find your API key in here. Just go to reveal and just copy that thing, come here again and just go with the 12 URL generator and go to the key icon again. And month-end close can be chaotic with lots of manual work and looming deadlines, but it doesn't have to be that way. In the down section of the key icon, just give the 12 API. That's it. And the next thing has been done successfully. So let's just go to the next API, and that's actually the value. And in the XAPI value, you have to give the key. So again, just go and click in the, just go and grab that, copy, come here again, just and again just click that about the stock. So then I can almost guarantee that you now getting straight into it. Now this error right here pretty much means that your API key is incorrect. The most common issue with this is that you have some type of spelling error going on here that's incorrect, right? Either you copied and pasted it wrong, you did something like, you copied it from this much, but really you needed the entire thing, or you tried entering it manually. Whatever the case is, that's probably the number one issue. Number two is that it's in an incorrect format. Sometimes, for example, with Open Weather Map, you're usually going to paste the API key at the end right here inside the URL. Other times, depending on the node, you might have to do it inside of a credential. For example, I'll show you really quick so you understand what I'm talking about. Sometimes you have to enter it here, go to create credential, do all that. But more times than not, it's probably a spelling error or a boom. You're from trying to match being given, boom, place it there. Get from the previous node unless you know for a
data, but rather than having 3 separate items, we're just going to have one item that has everything in here. Now, if we look at this, the way this is structured is kind of messy. It says symbol, interval, currency. We have a bunch of data points we don't need, and we don't need to write Apple every single time. So a way we can do this is by cleaning it up with a code node. Now, this is completely optional, but I find this helps the AI model understand and digest all of these data sources a bit easier. So what you can do is add one additional node here, and we'll type in code. And this is where we can run custom JavaScript code. But again, it's completely optional. You only really need it if you are a little bit worried about how the AI model is going to ingest basically 300 data points of financial data. And this just makes it a little bit easier on them so that they know how everything is properly labeled. So I've just pasted in some really quick JavaScript code here if you want to pause the video and see how this looks like. But this is super simple. All we're doing is structuring this output. We're not actually changing any data. So rather than this looking like symbol, interval, currency, etc., all we have is the ticker, and then we have the candles for the 1 minute. Then if we scroll down, we have the candles for the 15 minutes and then candles for the 1 hour. So the way this looks is just a lot neater for the AI model to understand all these data points. Now you can consider all this data gathering portion of the candlestick data as finished. And what we can do as kind of just like a cherry on top is get some news sentiment based on all the news around the stock ticker. So Apple, for example, we can search for all the recent news articles about Apple in the past 24 hours to see how this will impact the stock moving forward. So let's go ahead and add a 4th HTTP request here below. Once again, just type in HTTP request. And this time we're going to use a news API because again, we want to get all the news articles for this specific ticker. So what you want to do is just head over to newsapi.org and get your free API key. Again, completely free. Definitely do not pay into. And then just like before, we're going to want to this is the ticker. So scroll down and then we just want the text. So Q just means value here that when APPLE. And then we try to run this HTTP request, it's going to find a bunch of news articles on apples. You obviously don't care about the actual fruit apple. And that's why we always want to reference the stock ticker, which again comes from Telegram, is the date called -1 day. So prior from this would be June 13th, 2025. We'll paste this in and then others. So here was recently, so just a bunch of analyst reports. Unlock the world's largest, most liquid financial market with through them and provide us a sentiment of whether it's positive. And then we'll do OpenAI's models because they're cheap and effective. And then for the model here, I typically always do GPT-4.1 mini. So let's wait for this to load and select 4.1 mini. Next, let's go ahead and add a system prompt so the AI model knows what to actually do. But what I've written is that you're a highly intelligent and accurate sentiment analyzer in the financial markets. We want them to read all the news and then evaluate the immediate market reaction. More sensitive to like the beta, but also so type in JSON.stringify. We're going to be forced to output it. We have so they know. So type in merge here. I'm sure you're an expert already, but we'll set this as the first input. And then our new sentiments here will be the second input. And then after the merge, just like before, we want to aggregate into one single item. So right now, all at once, do all item data into a single list. And then let's test this step. And we can see that we go from 2 items to 1 main item here. And then on this output, we first start with the ticker, which is Apple, the 50 and the candles, 24 hours. It just combines plus. What we want to select is AI agent. And then for the source for prompt, we want to make our own prompt. So click the find below here. And then you can copy my prompt unified for hour or hold or exit price. And to just say this, but not pages, minute candles below. And below this, we have the sentiment analysis for the past 24 hours. Has time to our data, which is that's an adequate expert day trader, target stop loss not available, target price not available. Now this concludes our entry price not available. This should now show up inside our Telegram account. And just to show you that they've actually sent this over inside Telegram, we have our message exactly here. We have the technical recommendation. This concludes our day trader AI agent built completely within N8N. Now, if you found this video helpful or of any value, make sure to like, comment, and subscribe as it greatly helps the channel and we focus primarily
What if a bot could handle you profitable trades every single day? I built one inside N8N and it's designed to find $1,000 a day trading opportunities without me lifting a finger. The crazy part, it doesn't just look at charts. It reads X, Reddit, Yahoo Finance, and Google News for market sentiment data. And if you stick around, I'll show you how you can build this yourself. Most traders waste hours staring at charts, miss profitable setups, and they get too emotional. Me, I prefer to watch Netflix or go to the gym and letting my bot sweat the markets. This automation calculates RSI, MACD, volatility, and it even listens to retail hype. Think of it as your profitable AI day trader that never sleeps. And this is what the output looks like. I'm inside of my Telegram bot, and the trade that I wanted it to analyze was Nvidia. So the stock report is split into two parts, and you'll see why when I show you how to build the automation. It'll give you an executive overview, risks, potential catalysts, a multi-time frame technical view. So this looks at 1-minute charts, 50-minute charts, and 1-hour charts. It looks at resistance, it looks at volatility, average price volume. It'll give you a technical breakdown, which uses indicators like RSI, MACD, MA20, and so on, and it overlaps it with volume trend. The second part of the stock report will give you a consolidation. It'll give you key patterns, a trading plan, so an entry price, a stop loss, and a take profit, key market observations. Let's find out and test it. For this example, I'm going to use that and the 1-hour chart, and then it gets the analysis for all three of these. It combines all the data, it combines it all into a coded node before merging it, and it uses an AI agent to do some short-term analysis. The second part of the flow is the market sentiment agent. And what this does is that it will actually use the X agent, the Reddit agent, the Yahoo Finance agent, and the Google News agent. And the point of these agents is to scrape data from these platforms because we want to get an overall market sentiment. Once it has the market sentiment data, it will then merge it with the short-term analysis data, and it will plug it into a final stock, analyzed all the as opposed to the automation. But that's totally fine because I can show you exactly how you can find plenty of other scrapers on Apify. And if you're loving this video, please support me and like it, smash subscribe, and turn your notifications on. And if you have any comments, please leave them below. So to start this automation, I'm using a Telegram trigger, but this can be Slack, it could be WhatsApp, it could be whatever you want it to be. The next node is an HTTP request node, and this is to find the ticker itself. Because on the example that I showed you, I typed in Netflix, which is not the stock pick ticker. So what this does is this queries the Yahoo Finance API, which is this URL here, and then it adds the message from the Telegram text. So all I'm doing is I'm dragging this field over here and then placing it at the end, and that's what makes it dynamic. And when you run, you'll see something like this on the output side, and you can see that the symbol is NFLX. It'll tell you the exchange that it's on, it'll tell you the company name, score, indexes, etc, etc. Once you have the ticker, we then need to extract it, which is why I've got a code node, and all this does is it just extracts the ticker variable. So we have a bunch of data in variable the node. As this data combined into this part of the stock ticker.